Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This video is continuation of the previous example in which we balanced a line using largest candidate rule method. Example was 15.1 of the Grover book. So we will discuss the same example and we will try to assign the workloads to different workstations using Kilbridge and Western method. So let me start the presentation. So they are the steps which will be involved in this particular method, that is Kilbridge and Western methods. So here we will select the elements for workstation assignment based on the position of the operations, or you can say the work element, according to the precedence diagram. So I will just read out first the steps and then we will discuss it. So first you have to arrange the work elements into multiple columns within the precedence diagram. So this was the precedence diagram, and simply you will have to arrange those elements according to the column-wise distribution. So the initially the independent elements which do not depend on any other processes, they will be collected in the first column, and then all those elements which will follow element 1 and element 2, they will reside in the third column, and similarly the followers of the third column will reside in column number 3, and so on. So the first step is the column-wise distribution of the work elements. And then afterwards, you will have to rearrange the table as we rearranged it in largest candidate rule. But in largest candidate rule, that rearrangement of the table was totally on the basis of the work element operational times. From maximum to minimum, we have arranged that table in the descending order of TEK values. So the only difference between largest candidate rule, जिसको LCR भी कहते हैं, and Kilbridge and Western method is that in this one, first you will have to rearrange the or you can say distribute the elements into columns, and then we will rearrange the tables according to the column. So whatever element which will have largest TEK values, TEK value mean largest operational time, so that will be written on top, and then the time with the minimum value. So इसमें भी जो अरेंजमेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होगी TEK वैल्यूज़ की, बट दैट विल बी कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसमें एक ये है कि इफ़ एन एलिमेंट कैन बी लोकेटेड in more than one column, so then you can list that particular element in multiple columns also, like this one. So 5 को अगर आप देखें तो the follower of element number 5 is in column number 10. So you can adjust this 5 either in column number 2 or column number 3. So that will be your choice कि कहाँ पे आप जो है एलिमेंट को प्लेस करना चाहते हैं. So this was the only difference between the two methods, that you will have to rearrange the element tables according to the column wise distribution of the work element. And then rest of the methodology remains the same as of that we discussed in the previous method, that is the largest candidate rule.
So let us start. You have the precedence diagram. So first you will arrange it into columns. वो मैंने आपको बता दिया है कि how you can arrange the elements in column wise, and then you will rearrange the same table according to that column wise distributions. यहाँ पे अगर आप देखें तो in column number 1 we have two elements and the largest candidate is work element number 2. So I will simply write the second element on the top, and then it will be preceded by element number 1. So my listing within the table of elements will be like 2, 1, and then यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड कॉलम में, so the largest candidate is 3, then we have 5, उसका 0.3 है, और फिर एलिमेंट नंबर 4 जो है उसका सबसे कम है. सो लिस्ट की अरेंजमेंट जो कॉलम वाइज अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, so 2, 1 and then 3, 5 and 4. So यहाँ पे अगर आप देखें तो we have on the top element number 2, then 1, 3 and 5. Similarly the other elements. 5 के बाद फिर 4 आ जाएगा आपका, and then when you look into the अगर 5 आपने इस कॉलम में डाला हुआ है तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज फिर यहाँ पे आप उसकी अरेंजमेंट देखेंगे. But if for example if there is an element whose processing time is less than fifth element in this respective column, तो तब भी जो है वो आपका सेम रिज़ल्ट आएगा. लेकिन अगर इस कॉलम में लाइक फॉर एग्जांपल वर्क एलिमेंट नंबर 8 है आपका, 0.6 टाइम्स यूनिट है और इसका 0.3 टाइम्स यूनिट है, so definitely then maybe work element number 8 comes in that listing before work element number 5. Okay? But it will not affect your final solution. So third element को अगर आप देखें तो column को, so we have 8, 7 and 6. This is the descending order of the elements residing in the third column. So next list of element will be 8, 7 and 6. So 8, 7, 6 and so on for all the columns. इसमें rearrangement में ये भी आप लिख सकते हैं, you can add this column with the heading column, and then simply you can show that which element is residing in which column. These are the corresponding operational time जो कि एग्जांपल में गिवन थी. सो वर्क एलिमेंट नंबर 2 का जो है 0.4 मिनट्स था एंड सो ऑन, फॉलोड बाय द प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट. सो हर एक एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग TEK वैल्यू और उसके जो प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट्स है वो आप लिस्ट कर लेंगे. सो दैट्स इट. नेक्स्ट ऑफ द मेथडोलॉजी रिमेन्स द सेम. बाकी जो स्टेप्स हैं वो वही हैं जो लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल के हैं. सिंपली यू विल हैव टू स्टार्ट, बेसिकली यू विल देन डिज़ाइन दिस टेबल. आपने ये टेबल डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी जो कि लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है. तो सिंपली यू विल राइट स्टेशन, देन वर्क एलिमेंट, उसका TEK वैल्यू और स्टेशन टाइम जो है हमारे पास 1 मिनट है. तो यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दोज वर्क लोड्स to different workstations in such a manner so that every workstation operational time will not exceed that particular cycle time which is 1 minute. अगर 1 minute से exceed करता है तो it will directly affect the production rate. So this is our constraint, and another constraint is the precedence requirement. तो आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करनी होगी कि आपका जो साइकिल टाइम है इट शुड नॉट एक्सीड द अलाउेबल टाइम, प्लस यू विल आल्सो
fulfill the precedence, जो predecessors हैं और postdecessors हैं उनकी conditions जो है वो आपने fulfill करना होगी, ठीक है. So remaining steps remain the same. Simply you will have to start from the top of the table and you will look for the first feasible element that you can assign to the first workstation. So यहाँ पे अगर आप देखें, so both the independent operations are at the top of the table. This is because we have arranged them according to the column-wise distribution. And the first column will always be that column which will cover the those operations which will be independent of the others. So definitely it is the largest candidate, so this is the first feasible element that we can assign to the first workstation. Its processing time is 0.4 minutes और जो allowable time हमारे पास है वो 1 minute है. We can easily assign this task to the first workstation, and it also does not have any precedence requirement, so there is no issue in assigning this job to the first workstation. So आप station number 1 लिखेंगे and the first element that we can assign is 2, और यहाँ पे 0.4 है, तो total जो slot है हमारा वो 0.4 हो जाएगा, and still we have 0.6 minutes left. So again we will start from the top of the table and then we'll look for the second feasible element, and in this case work element number 1 जो है, this is also a feasible element whose cycle of processing time is 0.2 minutes, and it does not have any predecessor, so we can assign this also. So the next operation that we can assign to the same station is work element number 1. Its processing time is 0.2, so in total we have 0.6 minutes, so 0.4 minute का time जो है still it is left for station number 1. So then we can again look for another feasible element, and the methodology remains the same. When you select the feasible element, so you have to go back to the top of the table, और जो elements assign नहीं हुए, then you can look for the feasibility of those as well. So यहाँ पे अगर आप देखें third element, the predecessor of work element 3 is 1, and 1 has been assigned. So this means that we can assign this element also to the same workstation, but the other requirement is of the time constraint. If you look into the total operational time of work element 3, it is 0.7 minutes, and the time which we have on this particular station is 0.4 minutes. So it will violate the rule. It will increase the cycle time of the system. This means that production rate will decrease. So we cannot assign that. So work element 3 जो है वो हम assign नहीं कर सकते हैं. Similarly we will look for another feasible element then. So 1 के नीचे अगर आप देखें तो fifth element है, and the processing time of element number 5 is 0.3 minutes. So we have 0.4 minutes left, so we can assign this, and then we can look for the precedence requirement. Its predecessor is work element 2. Work element 2 जो है वो हम assign कर चुके हैं already. So it is fulfilling our requirement. So I can assign work element number 5 to station number 1. So this will be the order of operations for this particular setup. So 0.3 अगर आप assign कर दे, so still we have 0.1 minutes slot available at station number 1, and then we can look for an element whose element time or TEK value will be equal to or less than 0.1. So हमारे पास एक ही element है whose element time is 0.1 minutes, और 0.1 minute के predecessor अगर आप देखें तो this is 1 and 2. 1 and 2 operations
have already been assigned, so we can also assign this one. So point 1 हमने assign कर दिया है, and यहाँ पे now if you add up all those times, so exactly it comes out to be 1. So station number 1 यहाँ पे भी आपका busiest station होगा, and its utilization is 100%. So eventually when this workstation becomes full with reference to the available time, so you will have to add another workstation to the system. So that will be workstation number 2. And then the steps remain the same. You will have to start from the start of the table, look for the feasible element that can be assigned to station number 2, and so on. So this is the final distribution of the workload according to Kilbridge and Western method. और इसका अगर आप ग्राफ देखें तो let me show you the graph of the previous result also. So यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्क स्टेशन नंबर 1, 2 और 3 की यूटिलाइजेशन जो है वो ठीक है, एवरेज रेंज में आती है इसकी भी, लेकिन बाकी जो है अगर आप देखें तो 100% है, यहाँ पे 98% है, और यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दिस एग्जांपल इज़ इंटेंशनली मेड in such a manner so that it will not give you a good result using any of the available methods. So this example is basically for your understanding. यहाँ पे अगर आप देखें तो we have 100% utilization of workstation number 1. workstation 2 की utilization अगर आप देखें तो 81% है, 92% है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज आपके इवन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे 50 और कुछ था, यहाँ पे 65 और 65 है, ठीक है ना. सो इन दोनों की आपस में डिस्ट्रीब्यूशन लोड अगर आप देखें तो इवन है, बट अगेन इट विल नॉट बी अ गुड सोल्यूशन प्रैक्टिकली अगर आप एक सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम these two workstations will be underutilized, ठीक है ना. सो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टाइम जो है ये आइडल रहेंगे, ठीक है. दिस इज द ग्राफ शोइंग द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज वर्कस्टेशंस. The third method is the ranked positional weight method, and let me complete the slide so then we will discuss. If you compare all the three algorithms, largest candidate rule, Kilbridge and Western method, or this one, rank positional weight method, RPW method इसे कहते हैं, ठीक है ना. लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल को LCR मेथड कहते हैं, और किलब्रिज और वेस्टर मेथड को KW मेथड कहा जाता है. सो rank positional weight method में basically we calculate the rank value of each element. अच्छा, before that step number 2 and step number 3 in this case will also remain the same. Step number 2 और 3 जो है वही distribution of the work element है among the workstation, and once you generate the table, you rearrange the table. So the methodology will remain the same, that you will start from the top of the table and you will look for the feasible element that can be assigned to the workstation. So the only difference among those three methods or algorithms lies in the first two step, जो rearrangement आप करते हैं, ठीक है. So largest candidate rule में simply you rearrange the table according to the TEK values in descending order. In Kilbridge and Western method, you first rearrange the elements into column wise distribution on the precedence diagram, and then column wise distribution is rearranged into the table according to the
largest candidate rule of the respective column. Similarly, in rank positional weight method, first we will find the rank value of each element within the precedence diagram, and then we will rearrange the table according to the rank value of every element. What is the rank value? रैंक वैल्यू जो है ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू take any element, so the rank value of that particular element will be the time associated with that particular element plus the times of all those elements who will follow your desired work element. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यानी आर पी रैंक वैल्यू को आर पी डब्ल्यू वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना. सो इस एग्ज़ाम्पल में सिंपल ये शो किया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू फाइंड द रैंक वैल्यू ऑफ वर्क एलिमेंट नंबर 11, so the corresponding operational time is 0.5 units. So you will have to add 0.5 to all those operational times which will follow element number 11, and the only follower of 11th element is element number 12. So RPW value of 11th element will be 0.5 plus 0.12, जो यहाँ पे आपको शो की गई है, ठीक है ना. So RPW 11 means पोजिशनल वेट ऑफ या रैंक पोजीशन, या सिंपली हम कहते हैं कि रैंक ऑफ, या सिंपली हम ये भी कहते हैं कि वेट ऑफ एलिमेंट 11 इज़ 0.62. सेम एग्जांपल में अगर आप देखें आर पी डब्ल्यू 8 की वैल्यू, ठीक है ना, so this is the 8th element. So the time of 8 plus all the followers who will follow this particular element. So 8 के followers अगर आप देखें तो 9th element भी इसको follow कर रहा है, 10 भी आपका कर रहा है, then 11 and then 12, ठीक है ना. So this set of element are the followers of work element number 8. So 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 की जो भी यानी रैंक वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली, और ये वैल्यू जो होगी इट विल डिपेंड ऑन द ऑपरेशनल टाइम. सो RPW 8 अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, सो इट विल बी सिंपली 0.6 प्लस 0.27 प्लस 0.38 प्लस 0.5 प्लस 0.12, ओके, जो कि आपके पास आ रही है 1.87. So first you will have to find those rank values, RPW values of all the elements, and then simply you will rearrange the table according to those RPW वेट्स के मुताबिक आप करेंगे, और जिसका वेट ज़्यादा होगा यानी वो भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा. सो सिंपल केस है ये भी. फर्स्ट फाइंड आउट द रैंक वैल्यूज़ and then rearrange the table according to the descending order of the RPW values. So यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्क एलिमेंट नंबर 1 का जो है वो सबसे ज़्यादा रैंक वैल्यू आ रही है, और ज़ाहिर है इसमें वही एलिमेंट्स जो है वो ऊपर आएंगे जिसके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा होंगे. सो 1 है, फिर 3 आ रहा है, then 2, 4, 5. So they are the corresponding rank values, and the corresponding processing times or assembly times are in the next column, and then corresponding precedence requirements जो है वो आपके पास आखिरी कॉलम में आ जाएंगी. Rest of the steps remains the same. Then next step आपका यही होगा कि you will have to assign the workloads to द वर्क स्टेशंस. सो आपके पास वर्क स्टेशंस भी आ जाएंगे कि कितने वर्क स्टेशंस होने चाहिए, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है. सो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल एंड लुक फॉर द फर्स्ट feasible element, so again the first element in this listing
has no predecessor. This means it is an independent operation, so we can assign this. एंड 0.2 मिनट जो है उसका टाइम है, तो वी विल राइट स्टेशन नंबर 1, वर्क एलिमेंट नंबर 1 इसको हम असाइन कर सकते हैं. इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम इज़ 0.2. सो 0.2 मीन्स दैट इन टोटल वी हैव 1 मिनट टाइम. सो 0.8 मिनट्स जो है वो आपके पास स्लॉट अभी है. So we can assign another element also. So again we will start from the table and look for another feasible element. So अगर second element को अगर आप देखें, so its processing time is 0.7 minutes और हमारे पास slot में जो है वो 0.8 minutes है. So this means that we can assign this work element 3 to the same station. Then we will look for the कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीडिसेसर्स के वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं, है ना. सो इट्स प्रीडिसेसर इज़ 1 और 1 को अगर आप देखें तो ऑलरेडी इट हैज़ बीन असाइंड टू दिस पार्टिकुलर स्टेशन. सो दिस मीन्स दैट इट इज़ fulfilling both the requirements, so we can assign this element to the same station. ठीक है ना. सो नेक्स्ट एलिमेंट जो आप असाइन कर सकते हैं दैट इज़ 0.7 और वर्क एलिमेंट 3 है. And now the total busy time of this station is 0.9 minute. 0.9 minute means 0.1 minute का slot आपके पास रहता है, ठीक है ना. So now we can look for an element whose operational time will be 0.1 or less than 0.1. तो उसमें एक ही एलिमेंट था हमारे पास जो कि 0.1 है. So we can assign this element number 4 to the first workstation because it is fulfilling our requirement of time constraint. But next constraint अगर आप देखें जो कि precedence constraints है, तो इसके predecessor जो है that is 1 and 2. 1 has been assigned, 1 तो आपने assign कर दिया है लेकिन 2 अभी assign नहीं हुआ. So if operation 2 is not yet been assigned to any of the workstation, this means that you cannot start working on work element number 4. So we only have one feasible candidate and that at this time cannot be assigned to this workstation. So eventually you will have to then add a second workstation to the system. So second आप ऐड कर लेंगे और उसको फिर आप assign करेंगे workload in the same manner and finally you will get some distribution of the workloads to different workstations. So इस केस में भी अगर आप देखें तो in total हमारे पास 5 workstations आ रहे हैं. So if you compare these 3 results, जो theoretical result हमारा था उसमें हमारे में मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस जो आ रहे थे दे वर 4, है ना. बट इट वाज अ theoretical value which do not consider the waiting times and the precedence requirements, ठीक है ना. वो एक आइडियल कंडीशन में आप 4 से भी ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना. बट व्हेन यू bring in the line efficiencies, the line losses, the transition times, the repositioning times, and the precedence constraints. So theoretically, practically, it is impossible to have 4 workstations for this particular example. So each and every algorithm gives you at least 5 workstations in the system. और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी इसमें आपको नज़र आएगी. फर्स्ट 3 स्टेशंस की 90 है, 91, 92. फर्स्ट 2 अगर आप देखें अलगोरिथम तो उसमें स्टेशन नंबर 1 वाज 100% यूटिलाइज्ड और बाकी आपकी 92 और 90 कुछ इस तरह आ रही थी, you know. So somehow it has given you some uniform distribution of the workloads for the first 3 stations and then for the second last and last को अगर आप देखें उसमें भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है. 65% और 62% की है.
But overall, again, when you look to this solution, so it does not seem to be a better one, because again, work element number फोर स्टेशन नंबर 4 and 5 जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है ना. सो इसमें भी ऑलमोस्ट 40% टाइम जो है वो आइडल टाइम आपको मिलेगा. So that's it. This is the Excel graphical representation of the utilization of the workstations, and this is comparison of the all the three methodologies through which you can find the practical solution of this particular assembly system. So इस तीनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो among them the RPW method is a method which has given you a little bit uniform distribution to the workloads. Otherwise, none of these solutions you can say that they are the best one. So it is not the only uh, methods that you can use to level off these distributions and to increase the performance of the system. और भी बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें सिमुलेशन आ जाती है, जिसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग आ जाती है. सो वो फिर इंशाल्लाह आप जो है वो कुछ मेथड्स जो है वो 8 सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे, बाकी जो है वो मास्टर लेवल्स पे सिमुलेशन और वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं. So as far as this course is concerned, so we have these three basic models included in your course, with the help of which you can, up to some extent, get an appropriate solution for the assembly as well as for the production systems. So that's it. इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं 15 चैप्टर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन आस्क, जस्ट टेक्स्ट मी एंड देन वी कैन सेट फॉर अ टाइम टू डिस्कस द इश्यूज. और बाकी लाइन बैलेंसिंग से पहले भी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि you will only have to cover the problems that are associated with single model assembly lines, ठीक है ना. जो बैच मॉडल है या मिक्स मॉडल assembly lines है वो कोर्स पे नहीं है आपके. So overall, if we conclude or if we summarize this line balancing algorithm, so you will have to determine the maximum output for any system. तो उसके लिए आपके पास जो ऑपरेशंस पर डे है या द टोटल प्लांट दैट विल बी ऑपरेटिंग पर डे, वो उसकी तरफ आप जा सकते हैं. यू विल गो टूवर्ड्स द साइकिल टाइम, और जो डिज़ायर्ड टाइम है वो आपने कंसिडरेशन में लेना होगा. एंड साइकिल टाइम को अगर आप देखें तो साइकिल टाइम इज़ बेसिकली टोटल ऑपरेशनल टाइम per day divided by the desired time. और output capacity जो है that normally comes out through this theory, which will be the total operational time per day divided by cycle time. So it will give you the capacity of that system. The steps that are involved in solving the assembly line balancing algorithm were these. You have to draw the precedence diagram, फिर आपने cycle time determine करना होगा, आपने capacity find करनी होगी, आपने number of workstation जो है वो find करनी होगी. Then you will select a feasible rule. So ये open choice होगी आपके पास in most of the cases. कि अगर क्वेश्चन आता भी है तो rarely normally I mentioned
द रूल के इस रूल के तहत जो है वो आप इसको सॉल्व करें. अदरवाइज इट विल बी एन ओपन चॉइस, यू विल हैव अ प्रॉब्लम and it will be purely your choice to use the largest candidate rule or RPW या कोई दूसरा rule आप use कर सकते हैं. And finally, after finding the performance measures, the performance parameters, so you conclude your problem by finding the efficiency of that system, और वो efficiency जो है वो आपकी balance efficiency होती है. So eventually you will come to know after finding the efficiencies that some of the task times जो है वो आप even distribution उसमें नहीं कर सकते हैं and you will be having some losses. ठीक है ना. So ओवरऑल एफिशिएंसी को आप देखते हैं तो इट इज़ बेसिकली द समेशन ऑफ ऑल द टास्क टाइम्स, यानी जो आपके पास आउटपुट है, और आउटपुट इज़ योर अवेलेबल टाइम कि कितना टाइम आपके पास है. एंड इसको सिंपली अगर आप डिवाइड करते हैं जो आपके पास साइकिल टाइम है और जो नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 24 आवर्स, वन कंप्लीट डे एंड नाइट, सो 24 आवर्स में आप कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज सिंपली द साइकिल टाइम multiplied it by the number of workstations. For example, if the cycle time is 10 minutes and you have 6 workstations, so 6 into 10 means 60 units जो है वो आपके बन जाएंगे. And finally, when you come up with the balance efficiency, so then you can find the delays. So जो एफिशिएंसी आपकी होगी, सो द रिमेनिंग पार्ट विल बी डेफिनेटली द डिले. सो बैलेंस डिले विल बी बेसिकली 1 माइनस दैट एफिशिएंसी. सो अगर 98% एफिशिएंट है मींस यानी इफ द एफिशिएंसी इज 0.98, सो 1 माइनस 0.98 जो कि बाकी आपका 0.2 या 0.02% बनेगा. सो दैट विल बी द डिले ऑफ द सिस्टम. प्रोसेस पैरामीटर्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.